Hello. They say that your destiny is in your hands, and the way you write defines your destiny. And you and I were destined to meet today on this episode of A World in a Word podcast with Sonie Thakkar. This podcast spotlights expertise and enterprises who contribute to the betterment of society. But you know that already, don't you? Because we are in a series on graphology and how it can enhance your life. So we have with us our expert Mansi Thakkar to throw some more light on different aspects of our life and how handwriting can enhance it. And of course, something that we're all looking for, success. How do you define success? But can we talk about a specific kind of success, Mansi, and how graphology can help us? Well, Sonie, thanks first for inviting me again. As we know, success is very, very subjective. Success for you means something else, and for me, it's something else. But at the end, to reach success, the same old pattern works. The same old things need to be done. So success, though, may be very, very subjective, each to own, but the way to success are the same, which have been working for years together. That you need to have concentration, you need to have that confidence level, you need to not be working with your fears and insecurities, you need to take the right opportunities and all of it. So yes, to an extent, graphology does help to do away with our belief system, limiting beliefs which stop us, our fears, our insecurities. At the same time, enhance our positives, say work on our concentration levels, work on our confidence, and so on and so forth. Let's talk about something we do so often every day and we're not even conscious of it, our signature. And you were mentioning that the way we begin, the very first beginning of the signature, the way we start, creates the first impression? Yes, Sonie. So let's take a simple thing. Anywhere you are entering or you are being a part of, the first thing when we observe somebody entering a room or entering a place is that first impression, that how is the person moving inside. And that creates like, is this person open? Is this person closed? Does this person have the good vibes or the good energies that I can go and approach this person? Or will I be able to talk to this person? So that is called the first impression. Obviously the first impression is also when the person starts talking, that how do they open a conversation or something like that. So the same way a signature. The signature has two parts. One is our name and the other part is our surname. Sometimes we just sign just a name. The younger generation now just puts their name and that's all about their signature. But that's all okay. But how do they start? How does their first letter or the first starting point look? Is it confident? It is clear? Is it visible enough? Is it what they are trying to actually communicate? Like for example, if my name is Mansi and I am putting M as a first letter, but it's not very well made. Either it looks like an H or it is not visible or it's much more smaller than the other part of my signature, or it is overwritten, or it is covered with some circles around which have no meaning with my signature. It is not a part of any letter or word in my name or surname. Then all these affects how I am making that first impression or that first start. So when they say that when you're beginning a work, you need to announce. You need to announce to the universe, you need to announce to the people that this is okay, this is what I'm starting, or this is how I am starting, or what am I starting. That communication, that first talk has to be very, very clear. So that's how you start with a bang. Maybe it's not for that big announcement, but at least for yourself, that this is how I am going to start. Are you clear within yourself? It's not always to the other people, it's about also to yourself.
Are you clearly communicating with yourself that this is what I want in life? So that's the first step to success. तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा जब सिग्नेचर हम करते हैं तो एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है। तो ख़ास करके जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, कि पहली नज़र में हम को पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है। एक पहलू आपने ये बताया, दूसरा पहलू आप कह रहे हैं कि ये एक अंदरूनी बात है, हम अंदर से खुद को कैसा, किस दृष्टि से अपनी तरफ देखते हैं, कैसे हम खुद को महसूस करते हैं, कैसे हम खुद को व्हाट इज़ आवर ओपिनियन ऑफ आवर सेल्फ, एंड वही मैनिफेस्ट होता है, वही हमारी सिग्नेचर में दिखाई देता है। तो अगर इसको हम एक स्टेप आगे ले जाएं तो कोई एक दो टिप्स हैं कि हमको जो शुरू में जो स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर करना है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो बेस या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके हमको हमारी लाइफ में सफलता देगा, तो क्या आप एक दो टिप्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ओके, टिप्स ये है कि कई बार सिग्नेचर्स होती है जो इलेजिबल होती है। प्रॉब्लम इलेजिबिलिटी और इलेजिबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है अगर वो इलेजिबल हुआ और इतना छोटा हुआ तो आपकी कॉन्वर्सेशन जो आप अपने आप से बात करते हैं वो वहीं से शुरू होती है कि ओके मैं छोटा हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, या तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ अगर उसके ऊपर कुछ और लेटर्स चढ़े हुए हैं, या तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अगर कवर्ड है। तो पहली टिप यही है कि आपको शुरुआत एक क्लैरिटी से करनी है। तो आपका जो फर्स्ट लेटर है, चाहे बाकी का पार्ट जैसे पूरा मानसी है तो एम क्लियर होना चाहिए, बाकी का पार्ट चाहे इलेजिबल हो, ना दिखे या कुछ कंफ्यूजिंग हो, या तो एक बार चल जाए। के इसको आप बना रहे हैं इस तरह के जल्दी कोई कॉपी ना कर सकें? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। वो आप जैसे लिख रहे हो वो एक बार चल जाएगा, इट इज डूएबल, बट फर्स्ट लेटर हैज टू बी वेरी क्लियर। पूरा सिग्नेचर, पूरा नाम इलेजिबल होना नहीं होना इज अनदर एस्पेक्ट, अनदर ट्रेट विच यू कैन डिस्कस लेटर। लेकिन अभी इधर फिलहाल हम अपने कम्युनिकेशन अपने आप से और क्या हम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पे कर रहे हैं। तो द फर्स्ट लेटर हैज़ टू बी वेरी क्लियर, नाइस, लेजिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे चाहिए लाइफ में। जब तक हम अपने आप में क्लियर नहीं होंगे कि हमें क्या चाहिए, हमको कहाँ जाना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, वॉट आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट, वॉट मुझे क्या लोगों को समझाना है अपने बारे में और मैं अपने बारे में क्या समझती हूँ, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि कभी हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मगर कभी हम किसी और का भी सिग्नेचर अगर हम ध्यान से देखें, ठंडे दिमाग से अगर देखें, तो हम आराम से ये थोड़ी बहुत जो आप बातें कर रहे हैं ये पहलू हमको आराम से आसानी से दिखाई देंगे और उसमें कोई ख़ास हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं। पर ये ठंडे दिमाग से बैठना और फिर भी आप जो टिप्स दे रहे हैं, तो अगर मैं इनको इफ़ आई एन्यूमरेट देम, इनको अगर 1 2 3 में अगर मैं नंबर्स करके बोलूँ, तो एक तो है कि क्लियरली दिखाई देना चाहिए पहला अक्षर जो है। उसके बाद हो सके तो वो कोई ऐसा सर्कल या कोई गोल के अंदर ना डालें उसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट। और तीसरा है कि छोटा ना करें, खास करके बाकी के अक्षर के सामने छोटा ना करें। तो ये फिलहाल तो ये इतनी 3 टिप्स हैं। बाकी तो आपके वर्कशॉप्स में जो भी आप करते हैं, लोगों को बताते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सिग्नेचर आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकें, हाउ यू कैन improve the way you sign. It could be small changes. It could be something very, very simple. Maybe you haven't noticed it till today, but you can contact Mansi Thakkar. You know that the contact details are in the description below. So sign your way to success. So see that your signature is stronger and more robust. But we still have one more aspect to cover. How do you end your signature? For that, join us for the next episode of A World in a Word podcast with me, Sonie Thakkar, and our graphology expert, Mansi Thakkar.
Thank you for joining us today. Till we meet in the next podcast, How to End Your Signature.